चल। 32। Thatcher इंटरनेशनल पार्क। क्या करना है? Assess the financial performance of TIP using information given above. Thatcher International Park is a theme park and has for many years been a successful business which has traded profitably. About 3 years ago, the directors decided to capitalize on their success and reduce the expenditure, made on new thrill rides, reduced routine maintenance where possible, deciding instead to repair equipment when it broke down, and made a commitment to regularly increase admission prices. Once an admission price is paid, customers can use any of the facilities and rides for free. These steps increase profits considerably, enabling good dividends to be paid to the owners and bonuses to the directors. The last 2 years of financial results are shown below. तो 2014 का, 2015 का। अपन सबसे पहली बात तो क्या निकालेंगे? अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। 045 डबल ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाय 525, 19.9 आ रहा है 2014 का। और फिर 15 का आ रहा है 25.79% आ रहा है, तो मतलब 6% का ऑलमोस्ट ग्रोथ है इन नेट प्रॉफिट मार्जिन। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स थोड़ी सी कम हो गई है, बट दैट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डिविडेंड पेड बढ़ गया है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ विजिटर्स है एक्चुअली रिड्यूस्ड। तो मतलब जैसे इन्होंने एडमिशन प्राइस तो बढ़ाया। प्राइस बढ़ा है। हाँ। और क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टर सैलरीज इंक्रीज हुआ है। प्राइस बढ़ा है तो उसने खुद को भी लिया है, बोनस इंक्रीज किया है उसने। तेरा क्या बोला है? टीआईपी ऑपरेट्स इन अ कंट्री वेयर द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अराउंड 1%। हम्म। अपन नंबर ऑफ विजिटर्स से ये निकाल सकते हैं ना कि एक एक का ये कितना है, एक एडमिशन प्राइस कितना है। तो फिर अपन उसको इन्फ्लेशन लाइक कितना बढ़ाया है उसने वो बता सकते हैं, और ओह, इन्फ्लेशन राइट वाइज। राइट राइट राइट। नाइस वन यार। 525 डबल जीरो डिवाइड बाय 1,50,000। तो एडमिशन प्राइस पहले 35 था, और अभी एडमिशन प्राइस हो गया है 38 का। 38। सो 38 डिवाइडेड बाय 35, एवरेज प्राइस increased by 8.5%, whereas the average inflation rate is only 1%. 1%। Thus, there is a shortfall in the number of customers that come. बराबर। सैलरीज और बोनसेस थोड़ा सा बढ़ गया है, बट दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वर्क। सॉरी। देख, पहले तेरा मेंटेनेंस और रिपेयर्स का खर्चा 3,40,000 हो रहा था, अब तेरे को 3,90,000 देना पड़ रहा है, बिकॉज नाउ यू आर नॉट मेंटेनिंग द एसेट्स, नाउ यू आर डायरेक्टली रिपेयरिंग द मशीन्स या राइड्स जो भी। हाँ, बराबर। रिड्यूस रूटीन मेंटली, हाँ मेंटली, पर उसके बट अपना वेजेस कम क्यों हुआ है वो क्या बता सकता है? वेजेस कम कहाँ हुआ? वेजेस तो बढ़ी है। नहीं, 2,50,000 से 2,20,000 वेजेस हो गया, आई मीन। वेजेस कम हो गया है, और डायरेक्टर सैलरी और बोनसेस बढ़ गया है। ओके ओके। हाँ। हाँ, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ विजिटर्स, द नंबर ऑफ employees held by TIP would have हम्म। been seen as higher. Thus, certain employees must have been laid off, thus reducing the राइट। wages. राइट। This can also be due to cost cutting. ये भी बोल सकते हैं कि कॉस्ट कटिंग की वजह से भी शायद रिड्यूस हो सकता है।
आ जाए अनके सोल्यूशन पे। सबका ग्रोथ दिखाना ही पड़ेगा ना? हाँ, हाँ, सबका आ जा आ ग्रोथ जा। दिखाना ही पड़ेगा। यस, आ जा, आंसर पे आ जा। Sales growth. Sales are about 1.3%, working note 1, which is a little above the rate of inflation and therefore a move in the right direction. However, the average admission price is jumping about 8.6%, जो अपन ने भी निकाला, and the हम्म। number of visitors falling. There are clearly problems. Large increases in admission prices reduce the value proposition for the Proposition. customer. It is likely that the rate of increase is sustainable or even justifiable. Indeed, with volumes failing down by 6.7%, it appears that some customers are being put off, and price could be one of the reasons. Maintenance and repairs. There appears to be a continuing drift away from routine maintenance, with the management preferring to repair equipment as required. This does not appear to be saving any money, as the combined cost of maintenance repair is higher in 2015 than in 2014. Directors' pay. Absolute salary levels up, are up 6.7%, well above the modest inflation rate. It appears that the shareholders are happy with the financial performance of the business and are prepared to reward the directors accordingly. Bonus levels are also well up. It may be that the directors have some form of profit related pay scheme and are being awarded for the improved profit performance. The directors are likely to be very pleased with the increase in prices. फिर आता है wages are down by 12%. This may partly reflect the loss of customers, down by 6.7%. If it is assumed that at least part of the wages cost is available, it could also be that the directors are reducing staff levels beyond the fall in the level of customers to enhance short-term profit and personal bonus. Customer service and indeed safety could be compromised here. Net profit. Net profit is up a huge 31.3%, and most shareholders would be pleased with the net profit is a very traditional measure with that. Net profit is a very traditional measure of performance, and most would say this was a sign of good performance. Return on assets. The profitability can be measured relative to the assets base which is being used to generate it. This is sometimes referred to as ROI or return on investment. The return on assets is up considerably to 11.4% from 8%. This is partly due to significant rise in profit and partly due to fall in the asset value. मतलब वो फॉर्मूला में जैसे अपन करते हैं सेल्स वैल्यू अपॉन, नहीं, प्रॉफिट अपॉन एसेट का वैल्यू, कैपिटल Asset. एम्प्लॉयड. We are told that TIP has cut back on the new development, so the fall in asset value is probably due to depreciation being charged, with little being spent during the year on assets. In this regard, it is inevitable that return on assets is up, but it is more questionable whether this is a good performance. A theme park and all thrill rides in particular must be updated to keep customers coming back. The directors of TIP are risking the future of the park. ये सारा उनका पूरा वर्किंग. वर्किंग था। काफी बेसिक था रे, मतलब उन्होंने सारी परसेंटेजेस निकाले हैं और बोला है कि हम्म। कितने ग्रोथ है, ये वो है. एक्चुअली इतना ही रिक्वायर्ड है एग्जाम में, ये वो बोलना चाहते हैं. नाइस. अभी इस पे आ जाते हैं. सेकंड। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द फिर ये तो सर्विस। पढ़ा ही नहीं. अच्छा, ये ए पार्ट के लिए था. अच्छा, ये अभी बी पार्ट के लिए. हाँ। That's the quality of service which TIP provides to its customers using table 1. अच्छा, ये नॉन फाइनेंशियल पे रहेगा शायद. And any other relevant data and indicate the risk it is likely to face it continues if it continues with its current policies. During the ये year ड्यूरिंग द during the अर्ली. early part.
of 2014, TIP employed a new qualified management accountant. He quickly became concerned about the potential performance of TIP, and to investigate his concerns, he started to gather data to measure some non-financial measures of success. The data he has gathered is shown below. Hours lost to breakdown of rides. Oh, bhai, average Yes, waiting time per 22. ride. Bhai sahab. Note 1. TIP Yes. has 50 rides of different types. It opens 360 days of the year for 10 hours each day. तो अगर एक मिनट, ये 360 डेज तक 10 घंटे के लिए खुला है, बराबर है? हम्म। मतलब 3600 आवर्स। मैं भी वही सोच रहा हूँ। और 9,000 आवर्स का इसका ब्रेकडाउन कैसे है? ब्रेकडाउन इतना ज्यादा कैसे है? ओ भाई, ईयर 5 में तो देख 32,000 का है। वही। अच्छा, मुझे लगता है 50 को भी मल्टीप्लाई करना है, रुक जा, 50 इंटू थ्री अच्छा, 50 राइड्स भी है ना, हाँ बराबर। 10। हाँ, फिर 1,80,000 आता है। हाँ, फिर ठीक है भाई, हाँ मैं फिर लाइक ठीक है। assess the उसमें से quality of service. 9,000 लॉस ड्यू टू ब्रेकडाउन भाई। Hmm. Assess the quality of the service which TIP provides to its customers using Table 1 and any other relevant data and indicates the risks it is likely to face if it continues with the current policies. See, because of the average waiting time per ride from increasing from 20 minutes to 30 minutes, a customer might have to wait for extra 10 minutes and thus would not be able to ride uh, the most amount of rides that he could have in 2014. Yeah, would not be able to ride or take utmost advantage of the admission money. कैसे बोले इस चीज को? हम्म। अपने को बोला है any other relevant data that indicates the risk is likely to face it continues if it continues with this position. Would have to wait. Allow it to break down. See, due to the hours lost, see, if there are breakdown of rides, then certain customers who are coming to the theme park to ride a particular ride, to ride especially of a particular ride, would be disappointed if that particular बराबर। ride itself is broken, is if that particular ride is It's itself under under breakdown. maintenance. हाँ, हाँ अंडर मेंटेनेंस और अंडर ब्रेक नहीं, मेंटेनेंस तो ये लोग कर ही रहे, कर ही नहीं रहे ना. हाँ हाँ, इज अंडर अंडर रिपेयर और इज अंडर ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन ठीक है। Thus, this might question their coming back to the theme park, yeah, their return to the theme park. हम्म। अपन और गुडविल पे ही बोलना पड़ेगा ना इस पे तो। हाँ, फिर अपन ये बोल सकते हैं कि द क्वालिटी माइट बी अफेक्टेड एंड इफ सर्टन, मैं बोलना तो ये चाहता हूँ कि सर्टन मशीन्स, मैं बोलना चाहता हूँ कि मशीन अगर मर बीच में जाएगा। खराब हो गई तो इंजरीज हो सकती है, मर जाएगा। मर हाँ जाएगा कोई. समझ। हाँ, ये बोलना चाहता हूँ एक्चुअली. समझा। वो मेरे को भी वही लग रहा है, इंडिकेट द रिस्क दैट इट इज लाइकली टू फेस, बट नहीं रे। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में मेरे को वो मरने वाला तो मेरे को नहीं लगता इतना वैल्यूएबल होगा। नहीं, मरने वाला नहीं यार, बट ऐसा उसके रिलेटेड कि द इंजरी पेरेंट्स would होगा। be concerned regarding the हम्म। pupils going out on such theme parks where machine breakdowns are quite common. बराबर राइट। और Due to एवरेज वेटिंग, बोल बोल क्या क्या, बोल बोल. एवरेज वेटिंग मैं पूछ रहा था, एवरेज वेटिंग टाइम को और क्या बोल सकते हैं? मैं लाइक मैं पहले वही 20 बोल रहा था मिनट्स था कि अभी। because of the increase in the average waiting time of customers or pupils might be frustrated, because of which they won't suggest the same theme park to to their known ones or to their friends.
हाँ, वैसा। मैं भी ये बोल रहा था कि ड्यू टू द hours lost in the breakdown are quite high in 2015. The the क्या बोलते हैं उसको, the rides which are under breakdown or under maintenance are frequently under maintenance, and which is why the customers और जो भी आ रहे हैं, the peoples are forced to use other rides which मतलब like ऐसा गर्दी हो रहा है वहाँ पे, like getting clogged, ऐसा कुछ तो बोल सकते हैं like, हाँ ओ। एक वजह से दूसरे राइड्स पे ज्यादा गर्दी हो रहा हाँ, बिकॉज ऑफ द, बराबर, ये बराबर बोला तूने कि है। बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ पर्टिकुलर राइड्स द कस्टमर्स आर फोर्स्ड टू यूज अदर राइड्स, हाँ, because of which the average waiting time per ride would have increased. इंक्रीज। काफी sexy point, काफी sexy point. पढ़े पढ़े क्या? इनका पॉइंट कुछ एकदम ही सेक्स एकदम मतलब मस्त मस्त है। देख सेफ्टी आया, सेफ्टी आया। हाँ लेट्स आया गो भाई भाई, आया। मर नाइस जाएंगे लोग नाइस। भाई, लेट्स गो। Reliability of the rides. The R's loss has increased significantly. Equally, the percentage of capacity lost due to breakdowns is now approaching 17.8%. This would appear to be very high number for R's lost. This would surely increase the risk that customers are disappointed being unable to ride given fixed admission price system. This is bound to irritate some customers as they have effectively already paid to ride. Average queuing time. The queuing time, queuing भाई, queuing अपन clogging बोल क्यूइंग। रहे हैं, अपन waiting बोल रहे हैं, queuing. Average queuing time. Queuing will be seen as customers as dead time. Time they may see some waiting as inevitable and hence acceptable. However, TIP should be careful to maintain waiting times at a minimum. An increase of 10 minutes or 50% is likely to be noticeable by customers and is unlikely to enhance the quality of the TIP experience for them. The increase in waiting times is probably due to high number of hours lost due to breakdown, with customers being forced to queue for a fewer number of ride options. काफी अच्छा point तेरा point. Safety. The clear reduction in maintenance could easily damage the safety record of the park and is an obvious quality issue. Risks. If TIP continues with current policies, then they will expose themselves to the following risks. ओ Oh, भाई। bhai. The lack of routine maintenance could easily lead to an inch. Sorry. The lack of routine maintenance could easily lead to an accident or injury to a customer. This could lead to compensation being paid or reputational damage. Increased competition. The continuous raising of admission prices increases the likelihood of a new competitor entering the market, although there are significant barriers to entry in this market, for example, capital cost, land, and so on. Loss of customer. The value for money which customers see when coming to TIP is clearly reducing. Higher prices, less reliability of rides, and longer queues. Regardless of the existence of competition, customers could simply choose not to come, substituting another leisure activity instead. Profit fall. In the end, if customers' numbers fall, then so will profit. The shareholders, although well rewarded at the moment, could suffer a loss of dividend. Directors' job security could then be threatened. काफी वो अच्छे points. Calculation दिया. लोग ने लॉस्ट कैपेसिटी का कैलकुलेशन दिया। हम्म